Hello angels, welcome to my YouTube channel Angel Nurse Study Up. I hope everyone is doing very well. Let's start this video without delay. हेलो स्टूडेंट्स आशा करूँ समस्त बहुत भलरे थी तो पिला माने आमे तुमर आज किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस करबा तो सेटा तुम एग्जाम पई तुम पई बहुत हेल्पफुल हबो तुम सेटा को आराम से तुम मन पकई के लिखि परिबो किसी प्रॉब्लम होबनी तो तुम्हें जदि वीडियो को प्रथम शेष जाए देखिबो तेमे जाई तुम बुझी पारिबो क्वेश्चन सब तुमको घोषिया पे हबनी तुम मो कथा को भल भाबरे सुन बुझ देन तुम जदि चाहिबो कुछ नोट बनी पारिबो ठीक अछि आज क्लास को स्टार्ट करबा चलो तो देखिनियो प्रथम क्वेश्चन तमरो कोन अछि क्वेश्चन नंबर 1 Discuss in details the pathophysiology, clinical manifestations, diagnostic evaluations and nursing management of congestive heart failure. तो तुम्हारा congestive heart failure को describe करबा पई कहिछि तो कौन कौन तुम देके डिस्क्राइब करबा देछि तुमको डिटेल्स रे ये पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट तुम ये सब को देके तुम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को तुम डिस्क्राइब करबो तो जानिनियो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कोन ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए कंडीशंस इन व्हिच द हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड to meet the body's need, causing blood and fluid to accumulate in the lungs and other part of the body. Then कौन होइछि ना फर्स्ट तमे इंट्रोडक्शंस लिखिलो then definition कौन लिखिबो heart failure is a chronic conditions in which the heart cannot pump enough blood and oxygen to support other organ in our body ठीक अछि हार्ट हमर प्रॉपर्ली पंप करि पारेनी हमर ब्लड को जा फल कोन बिना हमर अदर बॉडी टिश्यू की अदर ऑर्गन गुडी को हमर जेति के दरकार ब्लड ऑक्सीजन एकर सब पाई परंती नहीं ठीक अछि देन तुम कौन लिखिबे पैथोफिजियोलॉजी तुम पैथोफिजियोलॉजी केमति लिखिबो फ्लो चार्ट अनुसार लिखिबो हला सब बळे फ्लो चार्ट अनुसार लिखिले कोन हो ना जे देखियो तुम खाता ताको भी इच्छी होबो से भलो भाबरे बुझी परिबो तो कौन लिखिबो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर हाइपरटेंशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस हला देन डिक्रीज लीड्स टू कोन हो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट लीड्स टू कोन हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशंस देन लीड्स टू इंक्रीज हार्ट रेट एंड vasoconstrictions leads to fluid retentions then pulmonary and systemic congestions leads to congestive heart failure हला तो एमती सब लिखिबो फ्लो चार्ट बनेबो फ्लो चार्ट बनै कि लिखिबो देन तुम्हारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन हो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्वेलिंग इन लेग्स एंकल एंड फीट देन तुम्हारा अछि फैटिग वीकनेस रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट एबे सब होबो ठीक अछि देन तुम कौन हम देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस रे कौन कौन करिवो हिस्ट्री कलेक्शन ब्लड टेस्ट इकोकार्डियोग्राम एमआरआई मायोकार्डियल बायोप्सी ये सब करिवो देन चेस्ट टेस्ट रे करिवो हला तो सब कर सरबो देन कौन हो मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट केमते दबा फर्स्ट तुम मेडिकल मैनेजमेंट लिखिबो देन तुम्हारा सर्जिकल मैनेजमेंट तो मेडिकल मैनेजमेंट रे कौन हो ना एसी इनहिबिटर सब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स दबो then तमार कौन दबा डायरेटिक्स हला then taxosin then maintain input and output patients हला कौन आउटपुट होची इनपुट होची सब मेंटेन करिवो then oxygen support should be provided to the patients जदि तार ऑक्सीजन दरकार होची तबे ताको ऑक्सीजन सपोर्ट मध्य दबो ठीक अछि then सर्जिकल मैनेजमेंट कौन करबा ना कोरोनरी बाइपास सर्जरी हार्ट वाल्व रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट हला ए सब हो देन कौन करबा नर्सिंग मैनेजमेंट रे कौन हबा तमरो एडमिनिस्टर डायरेटिक एसी इनहिबिटर्स बीटा ब्लॉकर्स देन फ्लूइड एंड सोडियम रिटेंशन देन ऑक्सीजन थेरेपी रेस्ट एंड एक्टिविटी पेसिंग देन मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट इलेक्ट्रोलाइट एंड डेली वेट देन पेशेंट एजुकेशंस ऑन मेडिकेशंस डाइट सिम्पटम्स मॉनिटरिंग हला पेशेंट को एजुकेशन दबो कौन हेछि केमति मेडिसिन दिया होछि से कौन पे नउछि तार डाइट प्लान कौन सब तको भल भाबरे बुझाई देबो ठीक अछि तुमरो नर्सिंग मैनेजमेंट एठी मागी जे तो तुम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखिबो ता सहित तुम मेडिकल मैनेजमेंट आ सर्जिकल मैनेजमेंट भी लिखियो कि पहिना तुम जदि एटा लॉन्ग क्वेश्चन रे आसुछि तेबे तुमको कौन करिया पे हबो बहुत सारा पेज लिखिया पे हबो तुम जदि अल्प अल्प लिखियो तुम्हारा पेज फिल अप होबनी से जहाँ देगी से गुड़ा सब लिखा सहित तुम अलग सब लिख कॉम्प्लिकेशंस साइन सिम्पटम्स एगुड़ा भी तुम लिखिपर तुम कौन हम पेज फिलअप सब तुम आंसर भी तुम जापर ना
ठीक अच्छे। देन कौन देख क्वेश्चन नंबर 2। देन तुम क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहे देख डिस्क्राइब एनीमिया इन डिटेल्स टाइप कॉजेस साइन एंड सिम्पटम्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो तुम एनीमिया को डिटेल्स टाइप्स कॉजेस साइन एंड सिम्पटम्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट लिखिया कही। तो एनीमिया कौन प्रथम आम जाना फर्स्ट डेफिनेशंस लिखा ठीक अच्छे। तो तुम एनीमिया डेफिनेशन कौन हम ना एनीमिया इज ए डिक्रीज इन द आरबीसी काउंट हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्राइट वैल्यूज resulting in a lower ability for the blood to carry oxygen to body tissue। ठीक अच्छे। तो एमती सब लिखे। देन कौन कही ना कजेस एंड साइन एंड सिम्पटम्स। तो तुम कजेस कौन हम कौन पर एनीमिया होता है। तो तुम कज कौन कौन होता एनीमिया कज आयरन डेफिशिएंसी तुम होता है। देन पीपल विथ एन आयरन डेफिशिएंसी मे एक्सपीरियंस these symptoms a hunger for the strange substances such as vaporize or diet। Upper curative and nails referred to as clinicians soreness of mouth with crackles at the corners। corners से तुम माउथ रे कौन मैंने crackles छाड़ी जीव तुम है। तो सेमती सब हम एनीमिया रे तुम जो स्किन सब रफ ड्राई देखा ठीक अच्छे। देन तुम कौन कही टाइप्स टाइप्स केते टाइप रो तुम अच्छी एनीमिया। तो फास्ट लिखा हूँ तुम टाइप्स फास्ट हेडिंग रे लिखा तुम एनीमिया एति टाइप अच्छी लिखिदेव पूरा 6 टाइप्स एनीमिया टाइप्स 6 टाइप्स। देन गोटे गोटे लिख आयरन डेफिशिएंसी देन मेगालोब्लास्टिक पर्निशियस देन हेमोरेजेनिक देन हेमाटोलाइटिक देन हेमाटोलाइटिक 2 टाइप्स लिख थैलासेमिया सिकल सेल एनीमिया देन कौन लिख एप्लास्टिक एनीमिया। तो ये सब लिख सारा देन गोटे गोटे करके डिस्क्राइब कर देन फास्ट लिख आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन तुम कौन हम पेपरटा को कौन बेसी जाऊँगी देन तुम कौन फुल कर पेपर को ठीक अच्छे। तो आइडिया दूसरे भितर तुम भल भाव शुण ठीक अच्छे। तो टाइप्स रे लिख पूरा फुल टाइप्स को लिखिदेल देन एक्सप्लेन कर गोटे गोटे को। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन हम एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन तुम आयरन बहुत लॉस हो जाए केते बेले लॉस हुए ना वुमेन आर एट रिस्क फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ग्रोइंग फिटस जिते बेले मेंस्ट्रुएशन होता है कि ग्रोइंग फिटस होता है ठीक अच्छे। देन तुम कौन अच्छी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन कर ना लेस इंटेक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो लिखिदेव लेस इंटेक विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। देन कौन हम ना रेड बोन मेरो प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल आरबीसीएस ठीक अच्छे। रेड बोन मेरो कौन करते प्रोड्यूस एबनॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस करते एग्जांपल कैंसर ड्रग्स। देन तुम अच्छी पर्निशियस एनीमिया पर्निशियस एनीमिया कौन ना इनएबिलिटी ऑफ स्टमक टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन हेमोरेजेनिक एनीमिया कौन ना एक्सेसिव लॉस ऑफ आरबीसी थ्रू ब्लीडिंग स्टमक अल्सर मेंस्ट्रुएशंस हेमोरेजेनिक एनीमिया ठीक अच्छे। देन हेमाटोलाइटिक एनीमिया कौन ना आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स देन मे बी ड्यू टू द पैरासाइट टॉक्सिक्स एंड एंटीबॉडीज है। देन हेमाटोलाइटिक एनीमिया के टाइप 2 टाइप आम लिखीचे थैलासेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। थैलासेमिया कौन लेस सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन फाउंड इन पॉपुलेशन ऑफ मेडिटेरियन सी। सिकल सेल एनीमिया कौन हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर characterized by the red blood cell that assume an abnormal rigid sickle shape। Then aplastic anemia होची destructions of red bone marrow caused by toxins gamma radiations। Sign and symptoms तो sign and symptoms तुम्हारा कौन हो देन तुम्हारा होची कौन difficulty concentrating होबो dizziness fatigue हैला pale skin coldness yellowing हो leg cramps होबो insomnia होबो change stool color chest pain angina हार्ट अटैक हबार भी चांसेस अच्छी। देन कौन हम ब्लड प्रेशर तुम कमी जीव। देन रैपिड हार्ट रेट ये सब हम तुम चाहिए से रिस्क फैक्टर भी लिखिपर। रिस्क फैक्टर कौन कौन हम आयरन डेफिशिएंसी फास्ट देन क्रोनिक किडनी डिजीज हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग देन प्रेगनेंसी कैंसर है। तो ये सब हम टीनेज प्रेगनेंसी ए भी हुए। तो ये सब लिख रिस्क फैक्टर कौन कौन। देन तुम नर्सिंग मैनेजमेंट कौन कौन हम ना एम ऑफ ट्रीटमेंट हम नॉर्मलाइज द हेमोग्लोबिन लेवल एंड सेल इंडिसेस
Then individualized disease specific management depending on underlying causes. Lifestyle management କରିବା ପାଇଁ ହେବ. It is recommended that a patient with iron deficiency receive dietary advices. जो ताको डायटरी एडवाइसेस दिया से सही टाइम रे ताको खाइबो, से आयरन टैबलेट खाइबो, भल भाव में डाएट प्लान करिबो, ताको ए सब ऊपर तमे नर्सिंग मैनेजमेंट दबो. ठीक अछि. देन देखो तुमर क्वेश्चन नंबर 3 कोन अछि. Discuss in details the types, causes, clinical manifestation and nursing management of pneumonia. The pneumonia corona pneumonia is a inflammation of the lungs parenchyma cell of infective origin. It is described as lung parenchyma inflammation and abnormal alveolar filling with the fluid consolidation and exudation. It is the most common infections caused of death. Pneumonia कौन बुझिल. देन तार एटियोलॉजी कौन हम. बैक्टेरिया स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनिया. देन तुम कौन हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. देन भाइरस पे कौन हम इन्फ्लुएंजा भाइरस, एडेनोवायरस, राइनोवायरस. अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज फंगाई, न्यूमोसाइटिस. हला एज कौन हम एज 65 और ओल्डर हम. क्रोनिक इलनेस सच एज हार्ट और लंग्स डिजीज, लिवर सिरोसिस और डायबिटीज मेलाइटस, स्ट्रोक पे भी ठीक अच्छे. देन देखो तुम कौन कही टाइप्स. तो टाइप्स केते टाइप देखिया. तो तुम फर्स्ट अच्छे लेबर न्यूमोनिया, ऑल और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ वन और मोर pulmonary lobes involved when the both lungs are involved. It is known as bilateral or double pneumonia. Hello. Then bronchopneumonia कौन ना. ब्रोंचोन्यूमोनिया होची गोटे इन्फेक्शियस ऑफ टर्मिनल ब्रोंचियल्स रहता है that extends into the surrounding alveoli resulting in patchy consolidation of lungs. Then number 3 रे अछि interstitial pneumonia. Pneumonia कौन inflammation processes is more or less confined within the alveolar walls and peribronchial and interalveolar tissues. Then 4 अछि infective pneumonia, infective pneumonia, then community acquired pneumonia, then hospital acquired pneumonia, healthcare associated pneumonia, ventilator associated pneumonia. Then कौन अछि aspiration pneumonia. ए सब अछि. तुम से को डिस्क्राइब करबा हला. देन तुम कौन अछि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. The clinical manifestation कौन हो. nasal congestion, sore throat, fever, chills, dyspnea, chest pain, weakness, cyanosis, nausea, vomiting, then cough हला. एगुड सब हम cough टा मेन cough टा प्राय मोस्टली हेता है pneumonia रे. देन तुम कौन होची ना नर्सिंग मैनेजमेंट केमती दबो. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ता लिखि दबो. चेस्ट एक्सरे करिवो, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट करिवो, ब्रोंचोस्कोपी करिवो, स्पुटम कल्चर करिवो हला. एगुड सब करिवो. देन तुम कौन होची नर्सिंग मैनेजमेंट कौन दबो. तुम कौन करिवो चेक वाइटल साइन रेगुलरली इंटरवल्स, मॉनिटर एलर्जिक सिम्पटम्स, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस. देन अवॉइड एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एनवायरनमेंट. पॉल्यूशन एनवायरनमेंट रे सब कौन करिवो एवॉइड करिवो. देन डीप ब्रीदिंग हला. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिवो. हेल्थ एजुकेशन ताको दबो. देन यूज फेस मास्क सब बळे यूज करिवो. किसी जेमती डस्ट न जाए भीतर को हला तुमरो. देन देखो क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला ना. Explain in details the pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation and nursing management of diabetes mellitus. तो तुम डायबिटीज मेलाइटस कौन ताको भल भाव में डिस्क्राइब करबो. फर्स्ट देखिवा डेफिनेशन कौन डायबिटीज मेलाइटस. और डायबिटीज मेलाइटस is a group of metabolic disease in which there are high blood sugar levels on a prolonged period. It is caused due to the deficiency of insulin or resistance to insulin or both. The normal blood glucose level कितने ना 4 to 7 mmol per liter. Then तुम्हारा टाइप्स अच्छी. टाइप्स केते टाइप रो. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, देन तुम्हारा गैस्ट्रेंशन डायबिटीज मेलाइटस. तो टाइप 1 टा कौन इंसुलिन डिपेंडेंट आउ टाइप 2 टा कौन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. टाइप 1 टा केते बड़ हेतै सेटा होची छोट छुआ मानक माने जुवेनिल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस. देन तुम्हारा कौन टाइप 2 टा होची एडल्ट ऑनसेट एडल्ट मान को हेतै. देन तुम्हारा रहला गैस्ट्रेंशन कौन प्रेगनेंसी. तुम्हारा प्रेगनेंसी टाइम रे एटा हेतै. तुम्हारा आगुरु किछि से विषय तुम्हारा किछि हिस्ट्री नथिबो
तुम प्रेगनेंसी टाइम रे हम। ठीक अच्छे। देन इटियोलॉजी कौन हम न्यूरोपैथी रिड्यूस वुंड हीलिंग स्ट्रोक कार्डियक डिजीज हाइपरटेंशन एरा सब हम। देन तुम केमती मैनेजमेंट कर डाएट प्लान दबा ताकू केमती कौन खाइब डायबिटीज रे से देन ओराल एंटी डायबिटिक एजेंट्स दब एक्सरसाइज कर इंसुलिन थेरापी कौन कर शॉर्ट टर्म आउट लॉन्ग टर्म अच्छे शॉर्ट टर्म कौन एक्यूट इलनेस सर्जरी स्ट्रेस प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग एक्यूट इंसुलिन थेरापी शॉर्ट टर्म देन लॉन्ग टर्म कौन ना इफ टारगेट हैव बीन रीच्ड आफ्टर द ऑप्टिमल डोज of combination therapy consider change of multi-dose insulin therapy then patient education दबो। ठीक अच्छे। देन देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन कहला ना देखो डिस्कस इन डिटेल्स द पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ शॉक। तो तुम्हारा शॉक कौन ना शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस दैट occurs when the body's circulatory system fails to maintain adequate blood flow and oxygen delivery to vital organ। तो कौन होता है ना गोटे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थाए शॉकटा जो थे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फेल करता है मेंटेन करें ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी करें जो हमारे वाइटल ऑर्गन गुड़ी। ठीक अच्छे। लाइफ शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस वेयर द बॉडीज ऑर्गन एंड टिश्यू डू नॉट रिसीव एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड। आमर बॉडी रे थिबा जतिक टिश्यू आ जतिक ऑर्गन अछंती से माने हम जतिक दरकार करंती जतिक तंगर एडिक्वेट थाए सतिक ब्लड से माने पाई परिपर न रिसीव परिपर न थांती। ठीक अछि। तो सेमती टाइप्स लिखिबो तो तुम्हारा शॉक रो टाइप्स केते कार्डियोजेनिक फोर टाइप्स रो कार्डियोजेनिक शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक देन ऑब्स्ट्रक्टिव देन डिस्ट्रीब्यूटिव। देन पैथोफिजियोलॉजी केमते लिखिबो ना ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर बा कॉजेस एनी देन कौन हम डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन लीड्स टू कौन हम डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडीज ऑर्गन्स देन कौन हम लीड्स टू सेल डैमेज देन ऑर्गन फेल्योर शॉक। देन टाइप्स जो कहले 4 टाइप्स रो कार्डियोजेनिक हाइपोवोलेमिक ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव को ताको लेखिकी ताको भल भाव डिस्क्राइब करिवो। ठीक अछि। कार्डियोजेनिक शॉक केते पड़े ना कॉज बाय द हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप ब्लड कार्डियोजेनिक शॉक सते पड़े थे जे हार्ट हमर जतिकी तार इनएबिलिटी थाए जतिकी ब्लड पंप करिया था सेतिकी करि पारे नाही ता फल कोन होय ना हमर कार्डियोजेनिक शॉक हिते। देन हाइपोवोलेमिक शॉक कोन होता ना कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड जति हम बॉडी रे ब्लड आ बॉडी फ्लूइड जति लॉस हिचे सेते पड़ हमर हाइपोवोलेमिक शॉक हिते जेमति हेमरेज सिवियर बर्न डिहाइड्रेशन सेते पड़े हिते। देन कोन ना ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कौन होता है ना कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो जिते बेले हमर ब्लड फ्लो रे किछि ऑब्स्ट्रक्शन होता है सेते बेले हमर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक केते बेले ना ड्यू टू द एब्नॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एब्नॉर्मल डायलेशन होता है हमर ब्लड वेसल सेते बेले डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। तो भल भाव डिस्क्राइब करबो तार सब डिस्क्राइब कर सला परे तार पैथोफिजियोलॉजी इटियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट सब लिखिबो तापरे आ गोटे टाइप रो शॉक को डिस्क्राइब करबो जेमति के तमे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक लिखि सल्लो तार का को कहा जाय केमति हुए देन पैथोफिजियोलॉजी लिखिबो देन इटियोलॉजी लिखिबो सब लिखि सल्ला परे पुनी आथि लिखिबो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का को कहा जाय सेमति तार सब लिखिबो। ठीक अछि। तो आशा करुँच समस्ते बुझी पारिथिबो किछि हेले तुमको ये वीडियोटा हेल्पफुल हेबो तो भल भाव में पढ़ तो तुम एग्जाम किछि दिन मात्र रहिला इनमें क्वेश्चंस किछि किछि डिस्कशन करिया जहाँ फल तुम प्रैक्टिस भल भाव में हो। ठीक अच्छे। आज एतिकी आमे परवर्ती क्लास रे देखा आज एतिकी। थैंक यू धन्यवाद।